ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास सेगमेंट इकोनॉमी टुडे में। तो बजट 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने निजी करदाताओं को बड़ी छूट दी और जिस तरह से आप बजट पेश किया गया, वित्त मंत्री ने बजट प्रावधानों में कई ऐलान किए। इसके मुताबिक अब 2.5 से 5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर टैक्स आधा कर दिया गया है। पहले 2.5 से 5 लाख रुपए तक सालाना इनकम वालों को कुल आय का 10% बतौर टैक्स देना पड़ता था। अब इसे घटाकर 5% कर दिया गया है। हमारे साथ आप इस आधे घंटे में जानिए कि आपको कितना फायदा होगा। तो जी हाँ, आज का मुद्दा है बजट 2017 में किए गए इनकम टैक्स प्रावधान। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, बेहद आसान से तरीके हैं। ट्विटर के जरिए सवाल करना चाहते हैं तो हैशटैग इकोनॉमी का इस्तेमाल कीजिए, अपना सवाल भेजिए। और आज के प्रोग्राम में आपका जो सवाल है वो टैक्स से जुड़ा होना चाहिए। मेल के जरिए सवाल भेजने के लिए economytoday.ddnews@gmail.com का इस्तेमाल कीजिए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन। आपका बहुत बहुत स्वागत है वेद जी इस खास शो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास सेगमेंट इकोनॉमी टुडे की। तो टैक्स के मोर्चे पर इस बजट में कई लिहाज से काफी राहत दी गई है। क्या कुछ रहा इस बजट में टैक्स के लिहाज से, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली के पिटारे से आम जनता के लिए टैक्स के मोर्चे पर काफी राहत आई है। जिन लोगों की 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच आय है, उन पर अब 10% की बजाय 5% ही टैक्स लगेगा। हालांकि बाकी के तमाम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिन लोगों की सालाना आय 5 लाख से 10 लाख के बीच है, वो 20% कर के दायरे में होंगे और 10 लाख से ज्यादा की सालाना आय वाले करदाता को 30% टैक्स देना होगा। हालांकि जिन लोगों की आय 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है, उन पर सरकार ने 10% का सरचार्ज भी लगाया है। वही वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय 3 लाख से 5 लाख रुपए के बीच है, उन वरिष्ठ करदाताओं को भी पहले 10% के मुकाबले 5% टैक्स की देनदारी होगी। लेकिन आपको बताते हैं कि कैसे इस कदम से आपको कितनी बचत होगी। करदाता जिनकी सालाना आय 3.5 लाख है, उनकी टैक्स की देनदारी अब होगी 2500 रुपए, जो कि पहले 5000 रुपए थी। यानी आपकी बचत होगी 2500 रुपए की। साथ ही 3.5 से 4 लाख तक की सालाना आय के करदाताओं को सालाना 2500 तक की बचत होगी। वही जिन करदाताओं की आय 4.5 लाख से 10 लाख तक है, वो लोग 5000 रुपए से 12500 रुपए तक बचा सकेंगे। इस बजट में सरलीकरण पर भी जोर दिया गया है। जिन करदाताओं की टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है, उनके लिए इनकम टैक्स के लिए 1 पेज का सरल फॉर्म होगा। जिन व्यवसायियों की सालाना आय 50 लाख रुपए है, अब वो लोग 4 किश्तों की बजाय एक ही किश्त में अपना एडवांस टैक्स भर सकेंगे। इस बजट का फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी रहा है। व्यावसायिक उद्यमियों के लिए ऑडिट कराने की सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस बार के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जहां एक तरफ सरलीकरण पर फोकस किया है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्यम वर्गीय लोगों को टैक्स के मोर्चे पर राहत भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सबसे पहला सवाल वेद जी यही है कि जब भी हम बजट की बात करते हैं तो टैक्स सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है। एक आम आदमी के लिए बजट का मतलब ही टैक्स होता है। ऐसे में साफ तौर पर वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ये भी कहा कि सबसे ज़्यादा तो जो अगर कोई टैक्स पे करता है वो छोटा करदाता है। उसके लिहाज से जिस तरह का ये चेंज किया गया है, जो बजट में जो प्रावधान किया गया है, कितना इसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, इसकी महत्वपूर्णता इससे आइडिया लगाया जा सकता है जो वित्त मंत्री जी ने स्टैटिस्टिक्स शेयर किए पार्लियामेंट में। जी जी। उनका कहना है कि 66 लाख करदाता ऐसे हैं जो 5 लाख से ज़्यादा का टैक्स देते हैं और 4 करोड़ में से इसका मतलब 3 करोड़ करदाता ऐसे हैं जो 5 लाख से कम रहते हैं। और उन 5 लाख से वालों का स्लैब 10% से 5% कर दिया गया है। तो आप ये मान के चलिए 75% टैक्स पेयर को का टैक्स लायबिलिटी आधी कर दी गई है, 10 से 5% कर दिया गया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और एक 75% टैक्स पेयर को रिलीफ मिला है। रिलीफ ऊपर वालों को भी मिला है, इनको तो डायरेक्ट मिल गया है और जो सभी को बेनिफिट हो रहा है 12,500 रुपए का, इस टैक्स में सभी को बेनिफिट आ रहा है, एक्सेप्ट एक ब्रैकेट जो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में जिसमें एक सरचार्ज लगा 10% का। ये बेनिफिट सभी को अक्रॉस द बोर्ड आया है।
Well, Mr. Jain, when we talk about, there is another argument that comes in. Let's make it balanced. In fact, when we say that there is a sort of a relief has been given to the common man, at the same time, the people who pay, who are paying taxes above 50 lakhs and 1 crore rupees the income, they are levied some 10% surcharge to actually balance the revenue losses that are required based on cutting down this 5% income tax rebate. Now, how do you think that apparently will be helpful to cover up the losses? See, budget is always a balancing exercise. When you give some benefit has to be withdrawn. Otherwise, how the expenditure will be met? When the budget exercise of the nation is not different of the budget exercise of a household. If you want to curtail certain income which you have the sources, then definitely you have to cut it down the expenditure. True. Or you have to find out the ways and means to bring back the income from some other sources. So when the finance minister has taken a call of reducing the tax rate from 10% to 5% in a bracket from 3 to 5 lakh, obviously he has taken into consideration from where this money should come in. And he has taken a call that people who are above 50 lakh need to pay a surcharge of 10%. And as the statistics has been shared, the total revenue loss on account of 10% to 5% is 22,000 crore. And the gain likely to come from 50 lakh plus 1 crore is only 2,000 crore. So still there is a deficit of 20,000 crore rupees on that part. So it's not that way. And they say it's always a capacity to pay. Only one thing which is to be noticed is that the slab from 5 to 20%, there is a too much wide a gap. See, now what happened is from income between 2.5 lakh to 5 lakh will be 5%, and the moment you go beyond 5 lakh, it is 20%. 20%, yes. So in a progressive system of taxation, which is normal for the direct taxes, a bigger jump, and there could have been one more step. True. Ideally, it would have been 2.4 to 4 lakh 5%, and 4 to 6 lakh 10%. So whatever you are losing on 5 to 6, bringing down to 10%, you will gain from 4 to 5 lakh rupees, and then 6 lakh beyond, it could have been 20%. So that would have been a little bit more progressive. True. But I could understand the compulsion of the finance minister when he was structuring this program. So probably the statistics were not helping him out. So he took a call, let's confine itself to the lower bracket and give a larger relief to larger number of people, that is up to 5 lakh rupees. So that's the agenda, I believe it has gone with him. ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो टैक्स के दायरे में लाना ही सरकार की प्राथमिकता रही है, लेकिन अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर उनकी भी बात कर ली जाए वेजी, तो उनके लिए भी टैक्स देना, खासतौर पर दिसंबर तक उन्हें टैक्स फाइल करना है, अगर वो नहीं करेंगे तो आयकर विभाग उन पर जुर्माना लगाएगा। इस टैक्स कंप्लायंस की वजह से भी क्या लगता है कि हम बढ़ोतरी दर्ज कर पाएंगे प्रत्यक्ष करों की अगर बात की जाए तो? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी से टैक्स तो नहीं आने वाला है। वो तो उनको एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म में फॉल करने की जरूरत है। बहुत दिनों से कोशिश चल रही है, जब सेक्शन 30 ने इंट्रोड्यूस किया गया, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाया गया कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट रखेंगे, कैश 20,000 से ज़्यादा लेंगे तो आपको उसको आइडेंटिटी आपको बतानी पड़ेगी। अब इस बजट में लेकिन उनको रिटर्न फाइल करना जरूरी था, लेकिन रिटर्न नहीं फाइल करने की कोई पेनल्टी नहीं थी और कोई जुर्माना नहीं था। तो इस बजट में 2 महत्वपूर्ण कदम है। एक तो 20,000 से घटा के 2,000 रुपये कैश का कर दिया गया है, यानी 2,000 से ऊपर कैश लेंगे तो आपको आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी और वर्किंग करनी। और एक उनको कहा है कि रिटर्न भरनी जरूरी है दिसंबर तक, अगर रिटर्न नहीं भरेंगे तो उनके ऊपर पेनल्टी तो नहीं लगेगी, लेकिन जो टैक्स है एग्जम्पशन वो नहीं मिलेगी, वो एज गुड एज पेनल्टी हो गया। तो जो भी उनकी इनकम एग्जम्प्ट है वो टैक्स में आ जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं तो आइडियली तो कैश का बैन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी पे, कि अगर वो कैश लेंगे तो टैक्स देंगे, क्योंकि ये मान के चलना चाहिए कि कोई आदमी अगर कैश में डोनेशन दे रहा है तो वो पैसा डेफिनेटली नॉन टैक्स पेड है। तो उसका टैक्स अगर डोनर ने नहीं दिया तो डोनी पॉलिटिकल पार्टी है वो बियर करे। तो अब जो 20,000 से 2,000 किया गया एक अच्छा कदम है, ये नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसको और सख्त करना है और पॉलिटिकल, मैं चैरिटी बिगिंस एट होम कहता हूं, तो पॉलिटिकल पार्टी को पहले कॉल लेनी पड़ेगी, भाई हम कैश नहीं लेंगे किसी का, कोई भी आएगा। So, Mr. Jain, that the political parties to bring in transparency was an important move, in fact an interesting move too. But then when we talk about, you were mentioning about finance minister mentioning some sort of statistics, which apparently he himself used, that India is a non-tax compliant society. Now, do you think there have been relevant steps that have been announced in the budget to make it tax compliant in the coming days? I will not say that there is any direct provisions to make it a tax compliant. And any step towards that? One thing is the enforcement provisions are being strengthened. Okay. Years after years, some amendments are being made. But we need to understand 2 nitty-gritties on this part. First, to say that Indian society is by and large non-tax compliant, probably may be too wide, frankly, on this issue.
And secondly, when we say enforcement mechanism, so enforcement mechanism do create a problem for honest taxpayer also. Okay. So a balance has to be struck in between that what enforcement provision we want. Suppose a person who honestly pays the tax and he gets a notice, etc. It's a problem for him. You can't ignore it out unless because it's a. At the same time, a person who is not paying tax and he receives a notice and then there is no follow-up, that's also a problem for the administration. So something somewhere we need to work out a strategy how to get hold of those people who are not paying taxes in a manner in which we want to pay it. And for that purpose, exercise need to be carried out first. A scientific exercise, how many taxpayer country should have. The finance minister shared a data that number of cars being sold are 1.2 crore, something like that, and people paying taxes above 5 lakh rupees income is 66 lakh, and it's too wide a gap. It looks to be attractive proposition to find it out. But at the same time, we cannot ignore this agenda that the per capita income of the Indian pub is somewhere 70,000 rupees. And the income threshold exemption is 2,50,000 rupees. If every Indian is earning 70,000 rupees, so the number of taxpayers is still number of good. But there are a large number of people who may be earning more. And when we look at the number of people, 125 crore, the pub family size is 5 to 6 per size. And we work it out, at best the family size in India can be 20 crore. And 30% of the population is the below poverty line. So if we factored into all, then let us have a rational target of the number of potential taxpayer in India could be. And on the basis of, because we have number of people who are VAT registered, number of people who are service tax registered, number of people who are purchased car, number of people who have bought luxury item, number of people who are having houses at various places, metropolitan, etc. Carry out a very statistical analysis. And then we identified that potential taxpayer are say 8 crore, 9 crore or 10 crore, and we have 4 crore. And then we try to fill in the gap to identify those people. Having identified those people, then we go out and exercise whether these people are declaring the correct income or not. And then we analyze the profile of the person, gentlemen. How many cars, how many houses, how many luxury items this person is having, how is the habit of his spending, etc. And then we work it out. It's more a research and analysis which can bring more taxpayer and can make India more tax compliant. Well, absolutely. In fact, when we start analyzing things from the income point of view itself, Mr. Jain, now if the people are not even disclosing their income, then that itself will be clearly showing that it is, all the properties they are handling are like coming into the, non-disclosed ones, in fact. But then, as you said, rightly mentioned, in fact, the research and analysis is really important for this whole, and then things will obviously be coming out. In fact, government is working out very strongly on unearthing the undisclosed accounts and also the black money aspects as well. Let's slip into a short commercial break. After the break, we'll be coming back with and continuing with our discussion. And also, you've been sending certain questions on our social networking handles. We'll also take those questions. Mr. Ved Jain will answer all those questions. Let's take a short break. Stay tuned. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world ranks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world ranks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world ranks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back to Economy Today. We have with us tax expert Ved Jain to answer all your queries. We are getting in questions on Gmail and Twitter handles. Without any delay, let's have a look at our first question. This is on our Gmail handle. In fact, let's have a look at our Gmail handle question now. Will banks work as a service provider? This is the first part of this question, Mukund Chandas Gupta. The second part is that will citizen choose account portability as per service given by banks? Mr. Ved Jain.
This is a question that whether the bank is a service provider. There can't be any two opinions only. Yes, banks are service provider. It keeps your money. It gives you loans, advances. It's a commercial venture also, but at the same time, it does provide service in a manner, your transfer of money, transaction which you have carried out. At the same time, when we are talking of portability, now the debate is on, and RBI has also initiated this process. As we have portability in the telecommunication, where you mobile phone service provider, you can change at your as and when you want. Today you have Airtel, you can go to Vodafone, or if you today want to Vodafone, you want to go to Reliance Jio. It's an option, whosoever is the best service provider. So now the discussions are on. When you have a bank account with one bank, maybe you have a Union Bank of India and you feel that you want to go to Punjab National Bank, that portability should be given. You just fill in the one application form that my account should be shifted. So all accounts get shifted to the new bank. So that's a portability which we are talking about it. It will improve the services, because whosoever is the best in providing services, who is close to you, nearby location, etc., all those benefits will be accruing to that. That's the idea basically. अगला जीमेल देखते हैं, कैलाश चंद्र जोशी का है। ये एक सरकारी जो है कर्मचारी हैं। वे जी जानना चाहते हैं कि अभी जो एनपीएस है वो करीबन मैं 10% गवर्नमेंट शेयर डिडक्ट होता है एज एन एम्प्लॉय, तो मुझे अब कितना टैक्स देना होगा? देखिए, एनपीएस के बारे में बड़ा क्लैरिटी है। आपको ध्यान हो, जब 6th पे कमीशन के बाद आया था तो सरकार ने उस पेंशन स्कीम को एक डिफरेंट कर दिया था, और जो कंट्रीब्यूशन 10% एनपीएस में जाता है वो एम्प्लॉयर का शेयर जाता है। एम्प्लॉयर का शेयर जो है वो टैक्सेबल नहीं है। एम्प्लॉय का शेयर 10% तक दिया जाता है, और एम्प्लॉय की शेयर की जो आप कंट्रीब्यूशन, आपको सैलरी मिली सपोज करिए 30,000 रुपीज़ पर मंथ, उसमें से 3,000 आपके उसमें एनपीएस में कट गए, तो आपकी इनकम तो 30,000 है, लेकिन 3,000 रुपये पर मंथ जो आपका कट रहा है वो आपको 80C में एग्जम्पशन मिलती है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं है। जब आप उसको विड्रा करते हैं उसके लिए भी प्रिस्क्राइब्ड मोर है, 40% तक आप विड्रा करते हैं तो पर्टिकुलर एन्युटी में वो टैक्स नहीं लगेगा। और वित्त मंत्री जी ने इस बजट में भी एक प्रोविजन किया है कि अगर 25% तक अगर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर विड्रा करेंगे तो उसके ऊपर भी वो टैक्स नहीं लगेगा। Well, let's have a look at the other question now. We are getting in questions on Gmail handles. Let's have a look at our third question on our Gmail handle at this moment. Please clarify about exemption on stamp duty and registration charges. Ashish Paranwal. ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्वेश्चन है, देखिए स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का ये है कि अगर मैं मकान खरीदने के लिए स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस देता हूँ तो क्या मुझे 80C में एग्जम्पशन मिलेगी। मुझे शायद लगता है कि ऐसा है। इसके बारे में 80C में क्लियर प्रोविज़न है कि इसके लिए डिडक्शन नहीं मिलती है, क्योंकि जो आप कॉस्ट ऑफ हाउसिंग में इसको कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो ये इस आई बिलीव 80C के बारे में कलेक्शन है। ट्रू। Let's take a look at other question. We are getting questions on Gmail and Twitter handle. Let's have a look at the other question which we got on our social networking handles at this moment. My annual income is 1,20,000. I save 40,000 rupees. In my saving account, there is 3,60,000 rupees. How much should I pay tax? Panchanan Sahu. I mean, I believe there is some error in this. I think he has an annual income of 12 lakh rupees, not 1,20,000 rupees. And because 1,20,000 rupees otherwise fully exempt. Mr. Sahu must have. And if we save rupees 40,000 in my saving account, how much should I pay the tax? In fact, I must be 12 lakhs. In fact, that's I believe it's not a correct figure. Absolutely. And if I calculate a tax on 12 lakh rupees with a saving of 40,000 rupees, which is for 80C, I believe, so exemption to a gentleman will available be for some 2,90,000 rupees. And if I calculate the tax calculation will come to somewhere 12,500, and then 1,12,500, and then 1,60,000 to 48,000. So 1,60,500 rupees will be the tax plus 3% एजुकेशन से सेट। वेरी क्विक। आइए देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है। टैक्स से जुड़ा हुआ क्या सवाल पूछना चाहते हैं दर्शक? जीमेल पर देखते हैं क्या है सवाल। Base year has been changed from 1981 to 2001. So tell me, if person having property which he bought in year 1990. I can answer this question. It's a very clear question. I think the answer is very simple. I can give you with an example. That in the second part of that question. And he sell the property in 2070, then what would be the capital calculation? I can just explain the procedure. Please. See, when the base year has been shifted from 1st April 1981 to 1st April 2001, meaning thereby is whatever is the cost of acquisition when you originally bought, and whatever the fair market value as on 1st April 2001, that has to be substituted. I give an example for the more clarity. Suppose this gentleman, Mr. Nigam, has purchased this house in 90 at a value of rupees 10 lakh, and then this value of this property on 1st April 2001 was say 25 lakh rupees. So now he can substitute 10 lakh by 25 lakh rupees,
and if he has sold this property, say in the year 2017, say for 1 crore rupees, then 25 lakh rupees he can have a cost inflation index. In the year 2001, it was 426. Presently, it is 1125, something like this. So he need to divide that new value of 25 lakh rupees by 426 multiplied by 11 and then work out the cost. If it comes to say 60 lakh rupees, that 1 crore rupees is the selling price, 60 lakh rupees is the cost, he need to pay tax on 40 lakh rupees at the rate of 20%. So the market price of 2001 will be... will be the cost of acquisition. Absolutely. That's the cost of acquisition which gets substituted. Right. ये देखते हैं कि अगला सवाल जीमेल पर क्या है टैक्स से जुड़ा हुआ। लगातार आपके सवाल हमें मिल रहे हैं। ये देखते हैं कि ये सवाल असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है कि अब सरकार किस तरह से टैक्स कलेक्ट करेगी, जहां पर हम अगर असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र की बात करते हैं तो देखिए, यही एक भारतवर्ष की विविधता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, बहुत बड़ा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है। तो अभी सरकार की जो इसमें दिक्कतें हैं वो सबको विदित हैं, और जो जीएसटी आ रहा है वो इसी के लिए आ रहा है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी अभी अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जितनी सेल एंड परचेज है वो सारी नेट पे आएगी, और जो जीएसटी नेटवर्क बना रहा है उस पर आ रही है। अब जीएसटी में एग्जम्पशन 20 लाख रुपए तक के नीचे रह जाएगी। 20 लाख से ऊपर वालों को सबका जो डाटा है वो सरकार के पास कैप्चर्ड हो जाएगा, तो वो डाटा आ जाएगा। सरकार की बहुत सारी कोशिश है बैंकों को कैशलेस इकोनॉमी बनाने की, ये करने की। वो सारी कोशिश इसीलिए है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़े और अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में कवर हो जाए। Right. Well, so let's have a look at other question as well. We are getting continuously, we're getting many questions. Let's have a look at other question too, Nav. And this question is in two parts. The first part is FM hinted that GST will take up all the procedures as prevailing in service tax. Does it mean that abatement, reverse mechanism, etc. will be restored under GST? Mahendra Arya. देखिए, ये अभी जीएसटी अभी डेवलपमेंट स्टेज की तरह है। अब जीएसटी लॉ जो मॉडल लॉ है वो पब्लिक डोमेन में है, और उसके अंदर उन्होंने ये रिवर्स मैकेनिज्म वगैरह वाले सारे रूल उन्हें क्लैरिफाई कर दी है। जब वित्त मंत्री जी ने ये कहा है कि जो सर्विस टैक्स वाला मैकेनिज्म सारा अवेलेबल होगा, उनका मतलब सिर्फ है इन प्रिंसिपल टर्म इट विल बी अवेलेबल। दैट डजंट मीन इट विल बी इन द सेम शेप, meaning thereby in case you have paid some service tax on your input services, you will be available to get it one. Secondly, reverse mechanism means that some people may not be required to pay the GST service tax today, but the service recipient is supposed to pay the service tax. Now in GST model, this mechanism, how this mechanism is going to work, the discussions are on, because there are certain category of people on whom GST probably may be difficult to implement. This issue is still to be resolved, how this reverse mechanism will work. Say in the case of advocates and lawyer, where service tax is applicable and the service is provided, but there is a reverse mechanism, service recipient makes the payment. So this issue has to be sorted out in the GST, how it is going to work out on this basis. Well, Mr. Vedjan, and there is another question we're getting on Twitter handle as well. There is not, they say there is not much clarity on tax rebate by investing 50,000 rupees in NPS, especially with respect to tier 1 and tier 2. Is there any lock-in period? That is one question. You can answer that question. And also there is other question on Gmail as well. There is a 5% concession on tax bracket of MSME manufacturing companies. Is it available only to private limited companies? So let me clarify the first question which you... I'll just continue as the proprietary firms as well. This is by Ballal Chandrachud. Let me clarify the second question first on this issue. See, it's a very clear that tax rate is applicable on a company, not on any other entity. Absolutely. And company doesn't make a distinction between a private limited company or a public limited company. But one thing one need to notice very clearly what is provided in the budget. This concessional rate of 25% is applicable to a company whose turnover during the financial year 15-16, not in the relevant concerned year, whose turnover during the financial year 15-16 was 50 crore or less. Okay. In case any company in the past 15-16 having turnover of 50 crore or less, irrespective of the turnover it has in 17-18, it will be liable to pay tax at the rate of 25%. That's the problem. Achha, okay. And regarding the tax rebate, sir, they need some clarity on now tax rebate on the issue of NPS, there is a clarity. There is nothing wrong in it. If you recall that there are two provisions, one is ATC and one ATC. Another benefit of 50,000, I believe the confusion is arising on a benefit of 50,000 rupees in addition to over and above. That benefit is over and above 50,000 rupees. There is no confusion about that NPS. So for withdrawal is concerned, no, you cannot withdraw it. Withdrawal is governed by particular section
10, 11A and 12A and 12B, up to 40% under certain circumstances and 25% which has been proposed in the present scheme. So once you contribute in NPS, you can withdraw it according to the NPS scheme only. The tax liability has provided in a particular section that 40% permanent withdrawal and 25% withdrawal as per the rules, then it is not chargeable to tax. वेज जब इस शो पर आया, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और टैक्स से जुड़ी कई ज्ञानवर्धक जानकारियां आपने हमें और हमारे दर्शकों को जवाब देकर दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। तो हर तबके को राहत पहुंचाने की कोशिश की है वित्त मंत्री ने, और साफ तौर पर जो सैलरीड क्लास है उसके लिए काफ़ी राहत भरा रहा ये बजट, खासतौर पर मध्यम वर्ग को ध्यान में रखा गया है। Well, before we wind up, let's have a look at the market situation. BSE Sensex at this moment is trading on that flat note, hovering between positive and negative territory. At this moment, down by just 2 points, 28,224. And Nifty is also showing similar trends at this moment, holding that 8,740 level still. Well, we are living at this moment. Stay tuned to DD News for other updates. Thanks for watching. Namaskar. नमस्कार।